तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कंसिडर करने वाले हैं वो सेकेंड चैप्टर का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मोreover, conceptually electric potential you must understand it very clearly because this is the base of electrostatics and all the topics in electrostatics are directly or indirectly based on this. You will get numericals based on electric potential. So let us first come to the concept of electric potential. What is electric potential? Electric potential. See, suppose there is a source charge here, plus Q, right? आपने पढ़ा हुआ है कि सोर्स चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव रहती है, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाती है. सो द स्पेस आउटसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी रिगार्ड दिस स्पेस एज इंफिनिटी. इस चार्ज के लिए इस डिस्टेंस के बाद अब इंफिनिटी स्टार्ट हो गई. मतलब यहाँ पे यदि आपने किसी चार्ज या टेस्ट चार्ज को रखा तो इस टेस्ट चार्ज को कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी. Is that clear? When this test charge or any charge placed here is brought within this range, इसके रेंज में आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. Means when you bring this test charge inside the electric field, this is going to experience a force. Now, एक और चीज आपने जो पढ़ा हुआ है, टेस्ट चार्जेस आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इन नेचर. यहाँ पे हमने अपना सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव लिया है, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव. मींस दिस टेस्ट चार्ज इज गोइंग टू बी रिपेल्ड व्हेनेवर इट विल ट्राई टू कम इनसाइड दिस फील्ड. ठीक है. मींस इस टेस्ट चार्ज को यदि मैं यहाँ पॉइंट ए तक लाना चाहता हूं, सपोज अप टू दिस पॉइंट ए, तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे ये रिपेल करने लगेगा. So automatically this charge cannot come to this place. अपने आप नहीं आ सकता है. It means some external agent will have to do some work to bring this charge from infinity to this place. मतलब किसी को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, कहीं से एनर्जी चाहिए इसे. आपने इसको एनर्जी दी, आप लेके यहां से यहां तक आ रहे हैं, इसका मतलब आपने वर्क डन किया. Suppose the work done to bring this charge up to point A is W. ठीक है. What is the work done per unit charge? WA upon Q naught. This WA upon Q naught, this is known as electric potential at point A. इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A. Now, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, और ये चार्ज यदि एक यूनिट चार्ज होता तो जो भी वर्क डन करना पड़ा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए. यदि ये यूनिट चार्ज नहीं है देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज करें. सो हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिफाइंड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. इंफिनिटी से यहां तक लाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अब आते हैं इसकी यूनिट पे. इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वर्क डन, यू नो वर्क डन की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में? वर्क डन इज जूल एंड चार्ज इज कूलम. सो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. 1 जूल पर कूलम इज नोन एज 1 वोल्ट. इसी को वोल्ट कहते हैं. So what is 1 volt? 1 volt is basically 1 joule per coulomb. Now exams में ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है. Define 1 volt. What is 1 volt? So 1 volt is the electric potential at a point in the field of a source charge in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point. और आप ऐसे कह सकते हो उसको, एक 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में यदि वर्क डन 1 जूल का करना पड़े then electric potential at that point is said to be 1 volt. Is that clear? अब एक दूसरा टॉपिक है इससे ही रिलेटेड, that is electric potential difference. सेम डायग्राम में वापस आ जाते हैं. सपोज
ये जो चार्ज था क्यू नॉट, आपने उसको इंफिनिटी से यहां तक लेके आए पॉइंट बी तक, ए से थोड़ा और आगे है, अभी ए पॉइंट को आप भूल जाए, हम इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके पॉइंट बी तक आ रहे हैं, और यहां तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है दैट इज डब्ल्यू बी। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज डब्ल्यू बी पर यूनिट चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, बी तक लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा या ए तक लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा? एज यू मूव क्लोजर टू द सोर्स चार्ज, the force of repulsion will become stronger and stronger. So the more closer you come, the more will be the work done. मतलब जितना नजदीक आप आते जाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। It means VB is greater than VA. अब मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली यहां से यहां तक आने में WB वर्क डन हुआ, यहां से A तक आने में WA वर्क डन हुआ, सिर्फ यहां से यहां तक आने में क्या वर्क डन हुआ? So that is VB minus VA, that is WB minus WA upon, this is electric potential difference. यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज is known as electric potential difference. How electric potential difference is going to be defined? It is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, a unit positive test charge from one point to another in the field of a source charge. Once again, electric potential difference is what? It is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another in the field of a source charge. Again, the unit of electric potential difference will remain the same. This is joule per coulomb, so this is volt again. So electric potential or electric potential difference, I suppose ये concept आपका clear हो गया. Now let us come to the next topic. This is line integral of an electric field. Line integral of an electric field. Again, this topic is related to electric potential difference once again. See, आपने एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज ले लिया, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज है, इसके बाद यहाँ पे इंफिनिटी है, राइट? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. आपने एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव करना है. ओके, सो ए से बी तक मूव करने में वर्क डन क्या हुआ? डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, करेक्ट? लेट अस कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल हियर. ए से बी तक जैसे जैसे आप मूव करेंगे, the force is going to increase gradually. So force in this case is not constant, so work done cannot be simply calculated by force into displacement, rather than it is calculated by integration of force into displacement. The limits of integration are a to b. I suppose ये चीज समझ में आई आपको. हमें a से b तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है. ए से बी तक वर्क डन लाने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल लेते हैं. देन फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ए स्मॉल वर्क डन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम लिमिट ए टू बी विल गिव यू द टोटल वर्क डन. नाउ इफ आई डिवाइड बोथ साइड विथ द टेस्ट चार्ज, द सिचुएशन इज लाइक दिस. आपने अभी पढ़ा था दिस इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. And force per unit charge is electric field. This is A to B. Now, this is actually work done per unit charge in bringing a test charge from one point to another, A से B तक लाने में. This work done, this is the work done by
देन एक्सटर्नल एजेंट, आपने किसी ने इसको ये काम किया यहां से यहां तक ला रहे। सपोज करो यही काम यदि ये चार्ज खुद से कर ले तो वर्क डन तो उतना ही होगा, बट सिर्फ जो वर्क डन अभी पॉजिटिव में आ रहा है वो निगेटिव में आ जाएगा। सो इफ द वर्क डन इज बाय द चार्ज itself, it is going to be a negative work done. It's simple. Okay. So VB minus VA, that is equal to minus of integration E dot dl, A to E. This is the work done by the charge itself. Line integral of an electric field इसी को कहते हैं. So what is line integral of an electric field? It is defined as the amount of work done by the electric field in moving a unit positive discharge from one point to another within the field. और वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से. Again, I suppose this topic is clear. Basically, what is line integral of an electric field? This is the work done by the electric field itself. And what is the formula for this? This is negative of A to B integration E dot dl. Okay. Now come to the next topic. Again, this is very important for your examination point of view, as far as conceptually also it should be very clear. This is calculation of electric potential due to a point charge. Electric potential due to a point charge. Once again, come to the same diagram. This is infinity, the test charge is here. This is point A, this is point B. Let us consider a small displacement dl in this direction. आप टेस्ट चार्ज को A से B की तरफ लेके आ रहे हैं, करेक्ट? Now, let us consider a vector dr which is just opposite of this vector dl. Means dl and dr are equal and opposite vectors. Okay. Now the formula we are having is Vp minus Va is equal to minus E dot dl from A to B. See, electric field intensity E due to this source charge will be always away from it, and dl is in this direction. So angle between electric field intensity E and dl is 180 degree. So now this can be written as E dl cos 180 degree from A to B. And cos 180 degree is minus 1, so this sign will become positive. This is E into dl A to B. Now make it a point, vector signs are removed, because we have already solved the dot product. Now, since dl and dr are just opposite vectors, so this can be written as minus of E into dr from A to B. dl को हमने dr से रिप्लेस कर दिया. dr से क्यों रिप्लेस किया? बिकॉज हमारे पास जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है फॉर अ पॉइंट चार्ज, दैट इज 1/4 pi epsilon naught q by r square. Here it is capital Q. So electric field intensity R के terms में, so we have also taken our work done in terms of R. Now, solving it once again, Vb minus Va, that is minus of electric field intensity, that is 1/4 pi epsilon naught Q. This is 1 by r square into dr from integration A to B. Now Vb minus Va is minus Q by 4 pi epsilon naught. Integration of 1 by r square will be 1 by r. So Vb minus Va, that is minus Q upon 4 pi epsilon naught. The integration is 1 by r. 1 by this is Rb and this is Ra. So Vb minus Va is equal to, this is Q by 4 pi epsilon naught 1 by Rb
minus 1 by Ra. This is the integration. Now this is electric potential difference we have calculated, and we are interested in calculating electric potential at a point due to a point charge. तो हम क्या करते हैं, हमारा टेस्ट चार्ज था यहाँ पे, ये इंफिनिटी, दिस पॉइंट वाज A एंड दिस पॉइंट वाज B. हमने ये वक्त निकाला है. इमेजिन करो यदि ये पॉइंट A इंफिनिटी पे होता तो क्या होता. If point A is at infinity, then what will happen? RA is infinity. यहाँ से लेकर डिस्टेंस पूरा इंफिनिटी हो गया, and potential at A will also become zero because work done will be zero. So putting these values here in this expression, this is VB minus VA, and VA will now become zero. So this is Q by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA is infinity. So finally VB is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by RB. This is the final expression we are having for electric potential at a point. In general, इसी expression को हम ऐसे लिख सकते हैं, V electric potential is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. So this is the final expression for electric potential at a point. Correct? Now let us move on to the next topic. This is electric potential gradient. Again, this is a conceptual topic. Electric potential gradient. See, this is the rate of change of electric potential with respect to distance. With a negative sign is known as electric potential gradient. The rate of change of electric potential with distance is known as electric potential gradient, and numerically it is equal to the electric field intensity. Why this negative sign is used? This negative sign simply indicates that in the direction of electric field intensity, as you move away from the source charge, R is going to increase and electric potential will decrease. So in the direction of electric field intensity, electric potential decreases. That's why this negative sign is used, and this expression is known as electric potential gradient. This is a conceptual term going to be used in the next topic. So let us come to the next topic, that is calculation of electric potential due to a uniformly charged sphere. See, a uniformly charged sphere there are three different situations. We can calculate electric potential at a point inside, at a point outside, and third, on the sphere. Let us say this is a charged sphere having radius r. If you take a point here at a distance r from it, this is a point outside the sphere. If you take a point on the sphere, this is a point on the sphere, and third, if you take a point inside the sphere, so all three different situations are shown here in the diagram. If you take this situation, we have already proved in Gauss theorem that electric potential for a uniformly charged sphere, electric field of a uniformly charged sphere at a point outside, on the surface, inside, that has been calculated in Gauss theorem. Now, according to Gauss theorem, this uniformly charged sphere behaves like a point charge, as if the total charge is concentrated at the center. मतलब कि uniformly charged sphere, according to Gauss theorem, it says it is a point charge. ऐसा लगता है जैसे सारा चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर पे लोकेटेड है. So basically, a uniformly charged sphere is a case of a point charge. Then,
At a point outside, it is electric potential V is kq by r. It's very simple. For a point charge, we are already having this formula for a point charge. For a point on the surface of it, on the surface, V will become kq by capital R. Distance will become the radius of this field. And for the third point inside, in case of Gauss theorem, you have seen that electric field intensity is zero inside. No electric field exists inside. And from the concept of electric potential gradient dV by dr, if E is equal to 0, it means dV by dr is equal to 0. Differentiation of any physical quantity is 0 means this physical quantity V is constant. So at a point inside, electric potential will remain same whatever is the electric potential on its surface. So everywhere inside the sphere the electric potential remains constant, that is kq by r. So I hope all these topics are clear to you, and you repeat this video once, twice or thrice. I'll send you the worksheets along with this. Solve it, and we'll discuss the problems once again in the next video. Thank you.